Learn, grow, succeed with Tiwari's Academy. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Welcome to recorded videos of Tiwari's Academy. My name is Akhilesh Tiwari. In today's video, we will talk about one particular sum. Okay. Now, CBSE exams have already started. Okay. So, maths paper was the first paper. Okay. Many kids were very much happy. चलो पहला पेपर मैथ्स से टेंशन खत्म सर, वी आर वेरी मच हैप्पी. इट वॉज नाइस डे बिफोर एग्जाम. ओके, नेक्स्ट डे वॉज मैथ्स पेपर एंड देन फाइनली मैथ्स पेपर हैपेंड एंड किड्स केम एंड दे शोड मी द पेपर मुझे मिला. पेपर देखने के बाद सबका मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ इसलिए था, मैंने बहुत कहा कि भैया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सम सॉल्व कर लो, थोड़ा सा हॉट सम सॉल्व कर लो, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा लो. नहीं सर, पास पेपर में ऐसा ही थे, लॉकडाउन के बाद से सब पेपर हमने देखा हुआ है, बहुत ऐसा है सर. ऑनलाइन देखा हमने, ऑनलाइन में भी ऐसे टाइप के सम्स बाकी जो भी क्लासेस वाले हैं वो दिखा रहे हैं. तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये वीडियो ना मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा. ऑफलाइन ऑनलाइन दो अलग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कैसे क्या करें, क्योंकि ऑफलाइन टीचर्स कुछ और कह रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स कुछ और कह रहे हैं. सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना. बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क लगती है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो. बट मैं ज़रूर बच्चों को कहना चाहूँगा कि CBSE ने इस बार जो पेपर सेट किया हुआ वो हॉट्स जो सेक्शन D था वो बहुत ही बेहतरीन था. लिटरली आई फील इट वॉज वेरी गुड. द रीज़न वाई आई एम सेइंग इट्स वेरी गुड बिकॉज टिल नाउ किड्स हैड दैट इन देयर माइंड, सर हम क्रैक कर लेंगे. क्रैक कैसे करोगे? बिकॉज हमें क्या हो गया था, हम एकदम हैबिचुअल हो गए थे नॉर्मल सम्स, फटाफट क्विक सम्स करने के लिए. हमने वो जो इंटेंसिटी चाहिए होती है, वो जो अप्रोच चाहिए होता है सम के पीछे. मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस जो मैंने अभी तक किए हुए हैं, जो मैंने डाले हुए हैं, उन सारे वीडियोस में मैंने एक चीज़ के बारे में बार बार कही हुई, अप्रोच. बट कोई भी सम को अप्रोच वो तरीका नहीं दे पा रहा है जो सम के लिए चाहिए होता है. ठीक है, पहला चीज़ तो ये था. ये जो पीछे आप सम देख रहे हैं, ये वही सम है जो सेक्शन D में आया था. मैं सेक्शन D के मैं सारे सम सॉल्व भी कर रहा था, और सम सॉल्व करते समय मैंने जब ये D वाला सम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. जो ये लास्ट सम था, जो 5 मार्क का सम है, 4 सम हमें सॉल्व करना है, जिसमें से 2 ट्रिग्नोमेट्री के थे, एक लीनियर का था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, और एक मीन और मोड वाला जो सम था. सभी सम बहुत अच्छे सम्स थे, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा बच्चों को कि अब बच्चे जो भी 9th में जो 10th में जाने वाले, उनसे मेरा ये बहुत ही एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ बच्चों, try to start solving hot sums, try to start solving little bit harder sum, because I have come across with many parents, sir, let's not do very hard sum, because what happens is kids will get demotivated. अरे भैया, डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता, कोई किड्स डिमोटिवेट नहीं होता. अगर तुम कोई डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुमको एक तरीका तुम जनरेट कर रहे हो उस डिफ़िकल्टी को हैंडल करने के लिए या फिर टैकल करने के लिए. वो चीज़ चाहिए बच्चों के अंदर, वो चीज़ अब मुझे दिखाई नहीं दे रही है. उनको हर चीज़ बहुत ईजीली चाहिए. ईजी मतलब एकदम फटाफट मिल जाए. सर आप मुझे फटाक से बता दो, फटाक से कोई शॉर्टकट दिखा दो, मैं फटाक से वो सम कर लूँ. सर मुझे बहुत ज़्यादा सम्स नहीं करना है. बट ऐसे ये जो अप्रोच है वो सारे बच्चों का नहीं है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लिटरली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. दे आर लिटरली सॉल्विंग मैनी बुक्स. NCERT बुक हो गया, आर शर्मा बुक हो गई, या फिर RS अग्रवाल की बुक हो गई, बहुत सारी बुक्स वो सॉल्व कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है. तो वो चीज़ चाहिए. वो जो हॉट्स का जो एक हमारे अंदर जो फियर था पहले, हम लोग जानते थे कि भैया हॉट्स का सम मतलब बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है. हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट सम सॉल्व करते थे. हमें आधे घंटे लग जाते थे वो सम को फिगर आउट करने के लिए, वो सम को सॉल्व करने के लिए. तो ये चीज़ होने वाली, और ये चीज़ होनी चाहिए बच्चों के अंदर. वो बच्चे वो आधा घंटे उसमें इन्वेस्ट करें, वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम उन्हें लगे वो सम को क्रैक करने के लिए वो टाइम वो इन्वेस्ट करें. बिकॉज जब वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वही 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो उन्होंने एक सम को क्रैक करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ, वो उनका आगे का रास्ता काफ़ी आसान बनाने वाला है.
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सारे बच्चों को, इनफैक्ट अभी CBSE वाले बेचारे लोग पहले बच्चे थे, अभी इसके बाद ICSE का पेपर है 2 मार्च को, उसके बाद फिर ISC वालों का है, फिर CBSE वालों का, 12th वालों का है। तो मैं ये चीज़ सभी को कहूँगा यार, प्लीज़ कोई शॉर्टकट नहीं होता मैथ्स के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को, इनफैक्ट कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई फास्ट या फिर फटाक से कोई मेथड दिखा दो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेरे लिए तो नहीं होता, मुझे बाकी टीचर्स का नहीं पता। बाकी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मैथ्स में, बहुत जीनियस हैं, मुझसे कई ज़्यादा लिखे पढ़े हुए हैं, कई ज़्यादा जीनियस टीचर्स होंगे। बट मेरा मानना यही है भैया कि ट्राई टिल यू सक्सीड। आप ट्राई करते रहो, सम को सॉल्व करते रहो और सम आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा कोई भी सम नहीं है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम सम ना सॉल्व कर पाओ, वो मैं मानता हूँ। अगर तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सॉल्व किया, दैट्स फाइन, वो होता है कभी। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें सम नहीं आ रहा है, नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुमने फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाए, अगर तुम नहीं कर पाए उसे, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, कोई और मेथड ट्राई करो। अगर सपोज़ तुम उस मेथड से नहीं कर पा रहे हो, अपने सर से पूछो, अपने टीचर से पूछो, कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ तो आने वाला है, फॉर श्योर वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बट ट्राई करते रहो। और वही सेम चीज़ मैं इस सम के लिए लाने वाला हूँ। ये सम बहुत दिन के बाद मिला, ठीक है, ये सम बहुत दिन के बाद मिला हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सम। मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगा बिकॉज कहीं ना कहीं ये टीचर्स के लिए भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल या फिर तुम कह सकते हो स्टिमुलेशन है। क्योंकि हम क्या होता है ना, हम एक तरीके के सम सॉल्व करते बच्चों के बीच में सॉल्व करते हमारा जो वो एक रिदम होता है, वो हाई थिंकिंग या फिर क्रैकिंग या फिर अप्रोच टुवर्ड द सम का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो जब ऐसे अचानक कोई एक सम आता है जो तुमको दिखता है, अरे यार ये सम कैसा है, वो अप्रोच हम कैसे करें, इसको हम सॉल्व कैसे करें, हम कैसे इसको मतलब क्रैक डाउन कर पाएंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं टीचर्स के अंदर भी लैग हो जाती है। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने ये सम को देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अभी कैसा है कि हम मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स करते समय हम ICSE का भी मैथ्स कर रहे हैं, CBSE का भी मैथ्स कर रहे हैं, और ISC हो गया, CBSE 12th हो गया, IT फाउंडेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के सम्स हम रोज़ डील कर रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप का सम जहाँ हमें उम्मीद थी नहीं आने की, वहाँ आ गया। तो यस, थोड़ा सा एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि यार तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तुम ये कह सकते हो, या फिर तुम तैयार नहीं थे कि यार ऐसा सम भी आने वाला है यहाँ पर। लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। एंड आई एम हैप्पी दैट किड्स डिड वेरी वेल, दे हैड देयर थिंकिंग टुवर्ड द सम which was very excellent. So now we'll get back to this sum very quickly and we'll see how we can crack down this sum, how can we solve this sum. Okay, CBSE 10th graders maths paper set 3, okay, set 3 का ये sum है. We'll solve that sum quickly. Now can you see this triangle given over here? This was the sum which was given to you and the given data is over here. Now on the given data they had told us that AD is a midpoint of BC and there is a line BX which is extended to AC which intersects AC at Y. And they have also told us that AX and XD are in the ratio of 2:3. So we have to prove BX is equals to 4XY. We have to prove what? BX, this line, is equal to 4XY, 4 times of XY. 4 times of XY. Now you must be wondering, how can we start with the sum? Now first thing, all the students will think, sir, can we take 2 triangles and quickly prove them similar, and then after similar, just we'll get the corresponding sides, cross multiply them, we'll get the answer. Okay, let's see which triangle we can take. Can we take any triangle? But don't forget, students, we have to always think of one thing. When we take a corresponding sides, the ratios are going to be required. So the ratios are given to us. AX upon XD is in the ratio of 2:3. If in case I take
any triangle with respect to AX and AD, I will get all the remaining corresponding side in the ratio of 2:3. So, but I need something in terms of 4. I need something in terms of 4. So I don't think by proving something similar, I will be able to get 4xy. I don't think. So any other method? From this diagram, I don't think there is any other method by which we can solve it. So in that case, we have to construct something. Now construction is very much required in this sum. So students, yes, this is the place where students lack out. Why I say lack out is because we don't know where we have to use construction, where we have to use what method. That only comes after practice. When you have solved this kind of sums, at least 10 to 12 sums minimum, then you know your approach toward the sum changes. All right. So let's draw a construction. Now the construction, you have to be very much careful while drawing a construction. So I'm drawing a construction over here. Now draw a parallel line to AC. I'm drawing a parallel line. Now I'm drawing a line parallel to AC from point D. So I will name it as E. Now DE is parallel to AC. This is my construction. Okay. Now you must be thinking, sir, why there was a need of doing this construction? There was a need of doing this construction, beta, because they have already told us that AD is median for BC. That means my D is a midpoint. If I have a midpoint, if I get another midpoint, don't you think that can I use something, you know, with midpoints, and I can use it something with respect to midpoint theorem? Okay, so I'm just trying to do something with respect to midpoint theorem. I'm trying to use midpoint theorem in this sum. Okay, so I made my DE parallel to AC. Now since my DE is parallel to AC and D is a midpoint given to us, D is midpoint of BC and DE is parallel to AC, don't you think that my E becomes midpoint of BY by converse of midpoint theorem? Correct? Now this was the reason why I made this construction. Now since I got this point E, now I proved point E is a midpoint of BY. Now since E is a midpoint of BY, that means BE is equals to EY. All right, this much you understood? Students, please try to, whenever you are doing this kind of sum, beta, you all have to need to know one thing, that whether it's midpoint theorem, whether it's similarity, whether it's congruency, they all are very much correlated to each other. So you need to know these all three chapters very thoroughly when you are doing this kind of sum. Okay, all right. So we got this BE is equals to EY. This was the first thing which I am doing it over here. Now we can take my two triangles. Now after this step, we have to assume two triangles, and I am going to prove them similar. So I will take this triangle and I will take this triangle. So in triangle AXY and AXY, all right, then DXE, triangle DXE. Okay, I have taken triangle AXY and DXE. These two triangles I have taken. Now can I say this angle is equals to this angle, vertically opposite angle? One thing. Second, this line is parallel to this line, so automatically what will happen? My this angle D, EDX or XDE, is equal to angle XAY or YAX. All right. So now I'm getting two of them equal, two angles
One is with the help of vertically opposite angle and the other one is with the help of alternate angle, because my DE is parallel to AC. So yes, angle DXE is equals to angle AXY by vertically opposite angle is VOA. Second one, XYAX. No, first I will do this. EDX is equals to EDX is equals to YAX. Reason is alternate angle. Alright, so now can I say my triangle AXY is similar to triangle DXE? Alright, DXE by AA test. Alright, this much is clear to everyone, I hope. Now next, once we have proved these two triangles similar, now I will take their corresponding sides. So now we will take their corresponding sides. So corresponding sides are going to be AX upon DX, AX upon DX. AX upon DX is equal to XY. Okay, so XY upon XE is equals to AY upon DE. Now these are what? CSST, corresponding sides of a similar triangle. Alright. Now, but we have got one thing. AX upon DX. Now they are in the ratio of 2:3. So AX upon DX is in the ratio of 2:3, which we have already got. Here, they have already given us. So this is given to us. Alright, is given to us. Now, okay, so now can I say over here AX is equals to, or simply can I just write down over here XY upon XE is equals to AX upon DX is equals to 2/3. So therefore XY upon XE is equals to 2/3. So can I write it as 3XY is equals to 2XE? Give it number 3. Now after this step, what we'll get? Now we have got here BE is equal to EY. Okay, but my EY is equal to EX plus XY. Give it number 4. I think it's 4 only, na? 1. I've not given 2 anywhere, I guess. 1, 2, 3. Okay. But now can we talk about BX over here or BE over here? BX in terms of BE. BX is what? BE plus EX. BE plus EX. But BE and EY, they both are same. So now can I substitute in the place of BE the value of EY, which is already given to us, EX plus XY. So BX is equals to EX plus XY. Okay. So BX, EX plus XY plus EX. So I will get 2EX plus XY. This is my BX till now. Okay. But we also know one thing,
that my 2ex, here it is, ठीक है, so from 2, we also know that my 2ex here is equivalent to 3xy, so bx is equals to 3xy plus xy, which is 4xy, hence proved. So students, hope you have understood this sum. Thank you so much for watching my video. Have a nice day. Take care. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna.